Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. Hope you all are fine. Welcome in your Oxford Reading Circle Class 4. Open book page number 78. Today we are going to read a story which is Adjutant Bird. So let's start. The tall, long-legged Adjutant Bird lived with his wife on the island Borneo. One day, while his wife was out flying, he, he fell asleep near their nest. On his back, his sleek gray feathers were neatly arranged, and the white feathers on his front were only occasionally ruffled by the warm breeze. While he was sleeping, a family of monkeys, 9 of them, came stealing down from the trees. They saw the Egyptian bird sleeping peacefully and started to comment on his appearance. लंबा सा लंबी टांगों वाला एक एजेंट बर्ड था जो अपनी बेगम के साथ ब्रोनियो के एक जजीरे पर रहता था। एक दिन जब उसकी बेगम उड़ रही थी, उसकी आँख लग गई उसके घोंसले के करीब। वो कमर के बल लेटा हुआ था। पीठ के चिकने ग्रे कलर के फीदर थे जो कि बड़ी सफाई के साथ अरेंज हुए हुए थे, और उसके जो सामने वाले सफ़ेद पर थे वो कभी कभार बिखर जाते थे गर्म हवा लगने की वजह से। जिस वक्त ये सो रहा था उस वक्त 9 बंदरों की एक फैमिली चुप चुप के दरख्तों से नीचे आई। उन्होंने देखा कि एक एजेंट बर्ड बड़े सुकून से सो रहा है और उन्हें वो कैसा दिख रहा था उसके ऊपर उन्होंने बातें करना शुरू कर दी। And did not hear them, and monkeys pushed and shoved each other and closer to the adjutant bird. They were broad and just to amuse themselves. They dared each other and pulled out all the tall bird's feathers. Then they rolled around hooting and laughing at him. They were so noisy that the adjutant bird woke up. The monkeys pointed at him and laughed at him because they thought he looked picturesque. The adjutant bird stretched his wings as if to fly off, but found that he could not do so. Then the adjutant bird began to cry aloud. What was he to do now? Without his feather, he could no longer fly in search of food. वो बड़ा परिंदा वो बड़ा वो बड़ा परिंदा बड़ी गहरी नींद में सो रहा था। उसने कुछ सुना ही नहीं। उन्होंने एक दूसरे को धक्का दिया ताकि वो और से करीब होते जाएं एजेंट बर्ड के। वो बोर हो रहे थे तो उन्होंने तफरीह के लिए एक दूसरे से शर्त लगाना शुरू कर दी और बड़े परिंदे के सारे फीदर्स खींचकर बिखेर दिए। ज़मीन पर कलाबाजियाँ खाने लगे हंस हंस के को या फिर ताने देने को हुटिंग कहते हैं। उन्होंने शोर मचा दिया, ताने देने लगे उनको। उन्होंने एजेंट जाग गया। बंदरों ने उसकी तरफ इशारा किया और हंसने लगे। वो समझ रहे थे कि कितना अजीब सा लग रहा है ये। पिक्चरल उसको कहते हैं जो दूसरों से मुख्तलिफ लगे, अजीब सा लगे, उसको पिक्चरल कहते हैं। तो एजेंट ने अपने पर फैलाए और वो उड़ना चाहता था, पर वो उड़ने तो एजेंट ने अपने पर फैलाए, वो चाहता था कि वो उड़ जाए, लेकिन उसको अंदाज़ा हुआ कि वो नहीं कर सकता, वो नहीं उड़ पा रहा। तो एजेंट बर्ड बड़ी तेज़ आवाज़ से रोने लगा। अब वो क्या करे? अपने परों के बगैर वो खाने की तलाश में उड़ के नहीं जा सकता था। After a time, his wife came back. She said sorry for him, brought him food, and asked him how in the world he had lost his feathers. The ignorant bird told her how these horrible monkeys had come while he was sleeping and plucked them all out, and how when he woke then he had laughed because he looked so funny. The ignorant bird's wife said, "Don't worry, my dear. I will take care of you until you grow new feathers." After about 2 months, the adjutant bird was able to fly, for his wings feathers had grown. कुछ वक्त के बाद उसकी बेगम वापस आई। उसे देखकर बड़ा अफसोस हुआ। उसको देखकर तो वो उसके लिए खाना ले आई
اور پوچھا کہ آخرکار کیسا ہوا یہ تمہارے ساتھ کہ تمہارے پر چلے گئے۔ ایجنٹ برڈ نے اسے بتایا کہ برے بندر تھے، وہ آئے تھے جب یہ سو رہا تھا۔ انہوں نے نوچ نوچ کر سارے اس کے پر نکال لیے، اور جب اس کی آنکھ کھلی دیکھ کر وہ ہنس رہے تھے کیونکہ وہ اتنا مزے کا فنی سا لگ رہا تھا۔ ایجنٹ برڈ کی بیگم نے اس کو کہا، پریشان نہ ہو، میں تمہارا خوب خیال رکھوں گی تب تک جب تک تمہارے نئے پر نہیں آ جاتے۔ تقریباً 2 مہینے کے بعد ایجنٹ برڈ اڑنے کے قابل ہو گیا۔ اس کے پروں کے نئے فیدرز واپس اگنے لگے تھے۔ All this time while his feathers were growing, he had thought and thought about all this time while his feathers were growing, he had thought and thought about is some way. All this time while his feathers were growing, he had thought and thought about some way in which he could get better of those monkeys. His feeling had been very much hurt, and he wanted to make quite sure that the monkeys would never do such a thing again. But he could decide on nothing. Then one day when he was walking about near the river, he met Bobo the tortoise. He told Bobo how those horrible monkeys had stolen his feathers and how his feelings had been hurt because they had laughed at him, and he hadn't able to fly for 2 months, and if it hadn't been for his wife, he would have died. Bobo was also angry with the monkeys. تو اس تمام وقت میں جب اس کے نئے فیدرز اگ رہے تھے تو اس نے سوچا اور بہت سوچا، یقینی بنانا چاہتا تھا کہ بندر دوبارہ کوئی ایسی حرکت نہ کریں۔ اس نے کتنا کچھ سوچ لیا پر وہ کوئی فیصلہ نہ کر سکا۔ پھر ایک دن دریا کے کنارے ببوک سے ملاقات ہوئی، جو ایک نے ببوک کو بتایا کہ کتنے گندے خراب تھے بندر۔ انہوں نے، اور اگر اس کی بیگم اس کی ہیلپ نہ کرتی، اس کے ساتھ نہ ہوتی تو وہ مر چکا ہوتا۔ ببوک کو بھی بندروں پر بڑا غصہ تھا۔ So student, your today's homework is this. You have to read this story again from page number 78 to 80, and also you have to underline difficult words and find its meaning. Send it to me on WhatsApp. Good luck. Allah Hafiz.